Hello everyone, welcome to Apti Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So moving to the today's topic list, today is 11th of October. The first topic is India-China discusses the disengagement. This is a long pending disengagement process which is ongoing. Second, initiatives for BSNL 4G network. Third, consensus over Kalapani. This is between India and Nepal. Second last, farmer in East see little hope in strip. That is a protest ongoing in the northern and the northwestern part of the country. And the last is India needs a carbon policy for agriculture. So this is an editorial from the Indian Express. Apart from this, there would be some MCQ based questions और ये जो questions होंगे ये current affair based होंगे ताकि आने वाले prelims examination में you can have a good foundations. Now without any further delay, let's get started. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Academy for Civil Services. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. And a small announcement that we have launched Prelims Test Series 2022. This is a 60 high quality test which you can avail and practice a lot more important questions. For more details, you can refer to the description section of this video where I have provided a dedicated link. Now, starting with the first news, that is India-China discusses the disengagement, something which is important for General Studies Paper 2, India and its neighborhood relations. So what does the news pertain about? We have seen that a lot of round table between the commanders and other level of officers in the military were already there, but this is the 13th round of talk which held recently, and it was held at Moldo in Chinese side. So the name become important not only for UPSC but from any other competitive examination also. और पूरी टॉक की जो फोकस थी, बेसिकली इफ यू सी दिस इज द थर्ड फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन द हॉट स्प्रिंग. और ओवरऑल डिसएंगेजमेट की अगर बात करें, जो डिसएस्केलेशन है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन. सो after the escalation which we have seen in the Ladakh region, some of the places have become very important in terms of location. UPSC can tend to ask you some locations, some physical geography questions from these sections. So make sure you practice some of the important questions and location. In addition, अगर बात करें overall additional disengagement की, so two sides have agreed to work for a new protocol patrolling to ensure such instances to do not occur. तो इस तरह की दोबारा कोई एक्सक्लेशंस ना हो, उसके लिए कोशिश की जा रही है. द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड एट द हाईएस्ट लेवल एंड इंडिया एंड बोथ चाइना आर ऑप्टिमिस्ट टू लुक फॉरवर्ड विद अ कंक्लूजन व्हिच इज हेल्पिंग बोथ ऑफ देम. नाउ इफ यू सी अ लोकेशन, आई हैव टेकन दिस मैप टू हेल्प यू आउट कि कौन कौन से लोकेशंस है जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं. तो आप ये देख सकते हो दिमचौक, एंड दिस इज दीपसैंग, दिस इज अस्काई चीन, काराकोरम रेंज. This is Ladakh region. This is the Indus Valley which is going. Recently, UPSC has asked the questions on the Indus Valley. If you have not checked this question, do check it out. Leh की locations यहाँ पे हैं, Siachen Glacier, right? So this is a map which will give you a complete, the places you should know. This is the Pongsoto. So this is a lake again. So make sure you take screenshot of this images, or you need to practice this, right? Because many a times questions is being asked directly from this type of sections. Series of meeting की अगर बात करें, so in May last year also there were meeting. Two sides have a series of talk in the different level, चाहे वो political level की बात हो, diplomatic, military, अलग अलग level पे कोशिश की गई है disengagement के लिए. And patrolling point 17 in the Gorkha area was also there in the August meeting. So both country are putting their best effort, but just to tell you, जिस तरह की conclusions इंडिया को चाहिए या जिस तरह की conclusions चाइना को चाहिए, उस बीच में अभी तक they are not getting a actual point of confidence. Now other frictional area की बात करें, so they are Deemchok and Deepsang. I have shown you a map. Do check it out. While the Deemsang is one of the two mutually agreed disputed area in eastern Ladakh, और Deepsang की बात करें, this is one of the 8 frictional point in this area. So these two names become important for you. And in the Deemchok, where the claims are there in the Karding area of China, which set up tents in the side of Karding Nala. So these names, locations, physical aspects are something which is very important. Make sure you practice some of the map work also, the river flowing, the physical mountain which is there. These sections would be important.
Now, initiatives for the BSNL 4G network, something which is important for General Studies Paper 2, government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from it. So why we are talking about BSNL 4G, as you know that BSNL in terms of providing network connectivity was not that great. हमने देखा है कई ऐसे private players हैं. If you're residing in metropolitan city, many other private players like Excitel, Comway, there are lots of people operator there are giving good services. Despite the fact the BSNL which was there in मेट्रोपॉलिटन सिटी वी हैव MTNL, राइट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट MTNL. तो उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं है. बट आफ्टर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड with BSNL 4G network connectivity, that is the upgradation of services. So let's understand the detail of this news. The Union Telecom Ministry ने अभी ये decide किया है, they have taken the first call that Indian 4G network state run telco, that is भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको BSNL के नाम से भी जाना जाता है, they have launched it and the test call for first made network developed indigenously. Yes, जितनी भी कोशिश की जा रही है, this would be under आत्मनिर्भर भारत initiative. And what government is trying to do, they are trying to incorporate the 4G network in India, which would be indigenous in nature. So the development is indications of a rollout of the technology by the BSNL. Now state run telecom, that is BSNL की अगर बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा डेट में चल रही थी. They have process of deploying pan India network, but if you see the total debt which is ongoing, the telco has sought the support of 40,000 crore rupees, which is want to be used the purpose of इंडिजियसली डेवलप्ड 4G टेक्नोलॉजी. गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ तक की एड दी है कि आप परचेज करें, अपने नेटवर्क को अपग्रेड करें एंड ट्राई टू मेक इट मोर रीचेबल बोथ इन द रूरल एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज. नाउ करंट फिजिकल ईयर की बात करें, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 24,084 करोड़ रुपीज फॉर द 4G स्पेक्ट्रम. और BSNL एक्सपेक्ट किया है आफ्टर द रोल ऑफ दिस सर्विसेज द यूजर would increase by the end of this calendar. Yes, definitely we expect that the customer base would increase, but to increase the customer base you have to improve your services, you have to improve your speed, you have to compete your competitor which are the private players. They are providing the plan at affordable price, right? आपने देखा होगा कई प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही बजट में उन्होंने पैकेज ऑफर की हुई है. तो BSNL को भी ऐसे कस्टमर ओरिएंटेड पैकेज लेके आने होंगे ताकि उनकी जो बेस है कस्टमर बेस वो ज़्यादा बढ़ सके. अर्लियर जो गवर्नमेंट के थिंक टैंक है नीति आयोग, उन्होंने भी कहा था, दे हैव सजेस्टेड दैट स्ट्रेंथ टेलको गॉट इंडिजिनसली डेवलप्ड 4G नेटवर्क डिस्पाइट द कॉस्ट. So we have to see in a comprehensive manner, in a long term manner. Yes, definitely अगर ये implement अच्छे से होती है तो इससे profit गवर्नमेंट को भी होगी and at the same time जो कस्टमर की penetrations है 4G सर्विसेज में BSNL के बारे में वो भी बढ़ेगी. So सितंबर में अगर बात करें, so the BSNL had the second time deferred telecom services provider to upgrade the 2G services and 3G services to the 4G services. जितनी भी नेटवर्क 2G और 3G में ऑपरेट कर रही है उनको 4G में अपग्रेड किया जाएगा. And BSNL is pushing for upgrade because of the pan India rollout 4G network by Indian firm facing the issues. So we are very optimist on this part. If a question is being asked, आपसे टेलीकॉम के बारे में पूछा जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस के साथ आपको उसके आंसर्स में ये भी बताना है कि क्या गवर्नमेंट की अप्रोच रही है एंड व्हाट इज द फ्यूचर फोरकास्ट. इफ यू आर गिविंग अ फ्यूचर फोरकास्ट, इफ यू गिविंग अ वे अहेड इन योर आंसर, मेक श्योर यू गिव एन ऑप्टिमिज्म आंसर, राइट. आपको ये बताना है कि हाँ गवर्नमेंट की कोशिश है आने वाले समय में चीज़ें अच्छी होगी, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर्स. Consensus issues over Kala Pani. We have seen this topic none less than a year back also, where the dispute was arising between India and Nepal, something which is important for General Studies Paper 2, India and its neighborhood relations. तो जो फॉरेन मिनिस्टर है नेपाल के, उन्होंने कहा है कि जो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में एक कंसेंसस है कि जो काला पानी का जो एरिया है दैट विच स्टिल इज इन उत्तराखंड इज अ पार्ट ऑफ नेपाल सोवरेन टेरिटरी. दिस इज व्हाट द नेपाल हैज टू से इन देयर ऑफिशियल स्टेटमेंट. तो मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी नेपाल की, दे हैव नॉट होल्ड अ प्रॉपर डायलॉग विद इंडिया. इस वजह से जो करंट कोalitions है, जो करंट एक्सकलेशंस हो रही है विद द कंफ्यूजन दैट इज अराइजिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इज द रीजन, राइट. तो उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर डायलॉग होने की ज़रूरत है टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट काला पानी इज अ सोवरेन रीजन ऑफ नेपाल. नाउ
There's a general consensus over common understanding across the Nepal political parties over the Kalapani. And India's Nepal relation were disturbing since 2020 when we have seen Nepal decided to include Kalapani region in the map of Nepal. But India is still reluctant on their part to directly give a consensus कि yes, Kalapani is your territory. So that calls for a lot more clarity. Still we do not have. Over the time जब भी न्यूज़पेपर में इस तरह की क्लैरिटी आती है, I will let you know. Now कालापानी की लोकेशंस की अगर बात करें, so this region is located in the easternmost corner of Uttarakhand पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद होनी चाहिए. Many times it tend to be questions. And it shared the border with the north in Tibet, autonomous region of China, Nepal in the east and south. And the region resembles the slice cake which with the Limpedurwa, Lipu Lake and Kalapani. It's like this shape. I will show you an image also. And the area of the India controlled the Nepal, but Nepal claims to be the historical and catastrophic regions. So Nepal ने इसमें अपनी territory बताई है, but still that needs a lot more clarity. So this is a image which you can see. This is by BBC. This is Indian side Uttarakhand. This is Nepal. This is Lipu Lake Pass, Kalapani, Limpedurwa, and you can see these three regions are disputed with bordering with China, right? Now the other news, farmer in East see little hope in history, something which is important for general studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from its design and implementations. So as the movement against agriculture reforms built, बहुत एक साल हो गई ये फार्मर के प्रोटेस्ट को ऑलमोस्ट. एंड कुछ ऐसे फार्मर हैं ईस्टर्न रीजन से, ईस्टर्न इंडिया से, जो अभी भी इतने मोटिवेटेड नहीं है कि वो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं. Mostly we have seen the protest in North India, Northwestern India, but the farmer from the Eastern India have not joined them, right? So the farmer group have not even experienced many of the benefits. उनका कहना है कि ना ही उनको इससे कुछ benefits दिखती है, ना ही law उनके कुछ जो खास करके rights हैं उनको वो उनके लिए कोई threatened है. इस तरह का stake रखा गया है from the Eastern state farmers. Now what more the farmers said? Farmers said they were densely populated in the area of the rural, खास करके ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें, रूरल एरिया में फार्मर्स की पॉपुलेशन काफ़ी हाई है. इफ़ यू सी आसाम, states like Odisha, Jharkhand, West Bengal, these are some of the prominent area where cultivation are being done predominantly. तो डबल बर्डन की बात करें, because of the procurement as well as the low prices is open to market. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो फार्म लीडर्स है वो रिफॉर्म चाहते हैं कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों पे, दैट इंक्लूड प्रोक्योरमेंट एज वेल एज पीडीएस. पीडीएस स्टैंड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये अलाउ करती है इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन प्रोक्योरमेंट को, जहाँ पे फार्मर एज वेल एज कंज्यूमर वुड बी बेनिफिटेड, राइट? तो आपसे कई बार पीडीएस के लूप होल्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंस में. व्हाट आर द थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द पीडीएस, उसकी जो रीचेबिलिटीज़ हैं एक्चुअल बेनिफिशरीज तक पहुँच रही है नहीं. केस स्टडी में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. Now, if you talk about the procurement and the PDS data, we have some analysis coming from the procurement of PDS data from 2022-2021, where it shows the stark divide. Government की जो procurement है, चाहे वो wheat की बात करें, paddy, especially in Bihar and West Bengal, it account for just 2% of national total. तो ये दो state की जो total national contribution है वो 2% है, despite the fact the latter country's largest rice producers. West Bengal is the largest producers among the rice. However, 10% of the all food grain allocated under the National Food Security Act last year went to Bihar and 7% went to West Bengal. So you can see productions के बावजूद भी सेंट्रल की तरफ से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अभी भी उनको ग्रेन दी जा रही है. सो व्हाट इज द फेल्योर दैट वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द पीडीएस, राइट? बेसिकली ओवरऑल प्रोक्योरमेंट की बात की जाए वीट और पैडी में. Now you can see this infograph which shows the states and its target. For Punjab, we have seen 27% procurement, MP 16%, Haryana 11%, Telangana 10%, UP 8%, and other state along with the allocation. So UP में 17% के आसपास, बिहार में 10%, Maharashtra 8%, West Bengal 7%, and Tamil Nadu again 7%. So this table depicts state share in the total wheat and paddy procurement and the share allocating under the National Food Security Act.
So this infographic would also help you to get an idea about the state procurement and allocations policies. Now the other news, that is India needs a carbon policy for agriculture, something important for General Studies paper 3. Issues related to direct and indirect farm subsidy, minimum support price, price distributions and other stuffs. So what this editorial talks about, this is being written by Mr. Gulati and Purvi Tyagoraj. So the editorial has 5 important subheads. If you see precisely, there are 5 important subheads. First is the global carbon atlas. Second, sector-wise global emissions, agriculture emission in India, carbon policy for agriculture, efficient fertilizer use and global emissions, right? So these are some of the important points that I'll be discussing. The theme is global emissions. So एक assessment report की बात करें, assessment report on inter IPCC, जिनकी grouping 1 ने data बताई है, that they have said that code red to humanity, we are heading towards 1.5 degrees Celsius hotter planet by 2050. This is what the report has to code. And US is set to host 26th UN Conference on Parties, that is called COP26. Glasgow में ये meeting होनी है, and this would be held from 31st of October till 12th of November. तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है to accelerate the action towards the जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट्स हैं, जो PCC है, पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या की जानी चाहिए, दैट वुड बी ऑल्सो डिस्कस इन द COP26. एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, इन्होंने कहा है कि इंडिया शुड फोकसेस ऑन क्लाइमेट फाइनेंसेस, ट्रांसफर ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट. तो नॉट ओनली इंडिया, ही हैज़ advocated that the entire globe should focus on climate finance as well as transfer of green technology at low cost. कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, कलेक्टिवली वो इमिट करते हैं ऑलमोस्ट कार्बन एमिशंस, और एस्टिमेटेड एमिशन अलाउंसेस की बात करें, दिस इज व्हाट द डेवलप्ड कंट्री इज कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ एमिशंस. बट द स्ट्रेंज पार्ट इज दैट आउट ऑफ 30 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, 22 सिटीज जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करती है. दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, दिल्ली इज अ वर्ल्ड मोस्ट polluted capital and has the air quality report 2020. As per the World Air Quality Report, Delhi को सबसे polluted capital का दर्जा दिया गया है in this report. Now global carbon atlas की अगर बात करें, according to global carbon atlas, इंडिया की जो रैंक है that is third in the greenhouse gas emission. So इंडिया की रैंकिंग है third. So which is the top 2 country? So the first country is China, which has 10 billion tons of carbon emissions, followed by United States, this is 5.4. थर्ड इंडिया की रैंकिंग है, और इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.6 बिलियन टन कार्बन एमिशंस है. उसके बाद रशिया is on the 4th and we have Japan in 5th. So this is the top 5 countries in terms of global carbon, right, emission, that is the greenhouse gas emissions. कुछ अगर बात करें ग्लोबल नेगोशिएटेड ऑन क्लाइमेट चेंज, सो दैट ऑफन टॉक अबाउट GDP on per basis, the emission intensity of the GDP of total 5 absolute emitters की बात करें, US has the highest per capita emitter, that is 15.24, followed by Russia, that is 11.12. Now India's per capita emission is 1.8 ton. ये डेटा कुछ हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, and lower than the world average, that is 4.4. But negotiation are not likely to be convinced by this argument. Definitely each country has to have its moral responsibility. India की अपनी national determined contributions हैं in terms of Paris climate change, that has to adhere not only by India but all other major countries. Sector wise global emissions की बात करें, so we have seen that the अगर global emissions की आप rate देखोगे तो electricity and heat productions, agriculture, forestry are using 50% of the emissions. But if you see India, it has a large chunk of 44% in terms of energy. Energy के अलावा जो सबसे ज़्यादा हमारी contributions है global emission में, that is coming from manufacturing and construction sector. This is 18%. ये data आपके लिए important है. Make sure you take a note of this. Agriculture, forestry and land uses is to 14%, और remaining being shared by transport, industrial process and waste sector. तो इनकी contribution काफ़ी कम है, but it seems that इनकी contribution ज़्यादा है. But सबसे ज़्यादा जो contribute कर रही है, that is manufacturing and construction sector. And the share of agriculture in the total emission has gradually declined by 28% in 1994 to 14% in 2016.
नाउ एग्रीकल्चर एमिशन इन इंडिया की अगर बात करें, सो इंडिया आर प्राइमरली अ लाइफ स्टॉक सेक्टर. यहाँ पे मीथेन की इमिशंस काफ़ी ज़्यादा है. दैट इज इंट्रिक फर्मेंटेशन इज अ यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. एग्रीकल्चर सॉइल्स में 90% तक है विच एमिट द नाइट्रोजस ऑक्साइड. राइस कल्टिवेशंस की अगर बात करें, यहाँ पे 17.5% तक एनारोबिक कंडीशंस में होती है विच अकाउंट फॉर मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इमिशंस, राइट, फॉलोड बाय लाइव स्टॉक मैनेजमेंट. तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट्स बताई हैं ये ऑलरेडी नोट्स के फॉर्मेट में है, आप डायरेक्टली भी इसको नोट कर सकते हैं. Now, burning of crop residues is 2.1%. So some of the important data only have incorporated. Now, carbon policy for agriculture की अगर बात करें, carbon policy for agriculture must aim not only reduce on emissions, but ये भी ज़रूरत है कि फार्मर को रिवॉर्ड किया जाए, कार्बन क्रेडिट्स दी जाए ताकि वह ग्लोबली ट्रेड भी हो सके, राइट. और वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की अगर बात करें, इंडिया नीड्स बेटर फीडिंग प्रैक्टिस with smaller number of cattle by raising their productivity. So this is a time where we need to have a level of advancement and some incentives to the people who are there in the cattle and livestock sectors. Efficient use of fertilizer बहुत ज़्यादा important है. Agriculture soils की अगर बात करें, single source of nitrogenous emission is the national inventory. और एक alternative और better efficient fertilizers के लिए we need to promote fertigations and subsidy soluble fertilizers. So this can be the better option, can be the way forward. और ultimately अगर बात करें, government should incentivize and give subsidies to fertigations, switching away from rice to corn in the less water intensive. ये भी ज़रूरी है कि किस क्रॉप में जो लेस वाटर इंसेंटिव है उसको यूज़ करना. प्रमोटिंग soluble fertilizer at the same subsidy at the granular urea. So at the price which is costing very less in terms of providing fertilizers, that would be also which would be required the farmer to use that, right. तो कम सब्सिडी वाले खास करके जो रेट ऑफ सब्सिडी है उनको भी एक सब्सटैंशली प्रोपोर्शनेट रखनी है ताकि बहुत ज़्यादा भी यूज़ ना हो और वो बहुत ज़्यादा महंगी भी ना पड़े फार्मर्स को, राइट. सो दिस इज हाउ द थिंग्स कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज. Now moving to the MCQ question of the day, before I proceed, just to tell you the answers of Saturday questions. For the first question, the correct option is C. For the second question, also the correct option is C. Today's MCQ, PM Atmanirbhar Swasth Bharat. It aims to provide insurance to people of BPL categories. It was recently launched by Union Budget 2021-2022. So which among the following is the correct option? You have to write that in the comment section down below. Second, National Hydrogen Energy Mission. This mission was capitalized on hydrogen for a cleaner alternative fuel. It will focus on generation of hydrogen from the green power resources. So which among the following is the correct option? You have to let me know in the comment section down below. So participate, write your answer in the comment section. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.